हेलो हेलो हेलो। For this. Join Valorant and play as one of a global गाइस ये वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का नॉट गेम फ्लिट के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर। और आज हम लोग बेचने वाले अपना पूरा सुपर कार कलेक्शन। अब वो क्यों होने वाला और कैसे होने वाला वो मैं तुम लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। for this. Join Valorant and play as one of a global गाइस ये वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का नॉट गेम फ्लिट के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर। और आज हम लोग बेचने वाले अपना पूरा सुपर कार कलेक्शन। Hi all, good evening. Good evening, ma'am. Let's start now. Let me know once my screen is visible. Okay, screen दिखती है? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, चलो quickly revise अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया and then we will move on to the next topic. ठीक है? As there was a gap of 4 days, we will revise what all we have seen till now and then we will start with the today's topic. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? Will you all help me revise the topics we have seen?
uh, commands, different types of command, DDL, DML, and DQL, Okay. TCL, and DCL. one DCL. DCL and Okay, that's okay. I mean, we have not seen TCLs and DCLs in detail because those are not necessary, so we can skip them for now. So, which all DDL commands we have? Yes, ma'am. Create, alter, create, truncate, truncate, drop. drop. Truncate and drop. Okay. Create. What is the use of this create command? If you have to create a database or a database object, we will be writing create query. What is the use of this alter command? We can change it. Structural Structural changes. changes. Okay. So if you have to modify the structure of your table, so that modification can be adding a column, removing a column, or changing the data type or data size of the column. What else? Rename करना है column को या फिर table को rename करना है. So basically, whatever is there in your table definition, and if you want to change that, if you want to modify those things, we will have to use this alter command. Okay. Truncate क्या करता है? Remove all the rows. Yes. Okay. So truncate will simply delete entire data of the table, and this drop. It deletes the object or the database. Correct. So drop क्या करेगा? It will help you delete data as well as the structure. And why I am saying data as well as the structure? कि क्योंकि जब आप टेबल को ड्रॉप करते हो तो we will lose the data as well as the structure of the table. Okay. Truncate करते हैं तो we are just losing the data. But when we drop a table, it's not necessary that table को drop करना है तो वो empty होना चाहिए, and that is why we can say that drop will help us delete data as well as the structure of the table. Do you all want me to revise the syntaxes of all these queries, all these commands? Yes, ma'am. Okay. Okay. तो सबसे पहले है आपका create command, create database और database objects. Database को create करने के लिए what is our syntax? What query we wrote? Create Create table. database name. Create database, database name. That's it. और create table के लिए क्या syntax था हमारा? Create Create table name and then column with data types. columns and their data types. Simple table definition. Okay, that is the use of create command we have seen. Next है आपका alter. So alter से आप column को add, delete या change कर सकते हैं. And the syntax for that is Alter table and then modify whatever you want. Add, Hold and add column, modify. correct. So alter table name, either of these keywords, that is add column or modify column or rename column or top column as per our requirement. And then you need to either give column को add करना है तो we will need to give column definition, that is column name and data type. So I'll write it in this way here also. ठीक है. Modify column के case में भी we will have to write new column definition. So that new column definition can have one second. So a new column definition can have a new data type or the new data size. Okay. Then we have this rename existing to new column name, and to drop you just need to give a column name. Are you all able to understand this syntax, like the format I have followed here? Add column Yes, है, column definition. Modify column के लिए this one. Rename column के लिए this, and drop के लिए this. ठीक है. That is the use of alter table command. Now, when we are adding a column, where it
gets added in the table? अगर आप सिंपल ऐड कॉलम का क्वेरी लिखते हैं तो नया कॉलम कहाँ पे ऐड होता है? Last at the end. Last में. एंड. तो फर्स्ट कॉलम अगर कुछ नया ऐड करना है, व्हाट इज द कीवर्ड वी हैव फॉर दैट? First. Before. वो आप कहाँ पे ऐड करोगे? आफ्टर दिस कॉलम डेफिनेशन. ओके, सेम वे अगर किसी कॉलम के बाद में आपको नया कॉलम ऐड करना है या फिर you want to add a new column in between two columns of your table, what's the keyword we have? After. So existing column, आपका column definition after and the existing column name जिसके बाद आपको ये नया column add करना है. So that is about alter table statements we have seen. next है आपका truncate. और सिंटैक्स क्या होगा ट्रंकेट को यूज करने का? टेबल का डेटा डिलीट करने के लिए Truncate table name. So it will just delete entire data of the table. And lastly we have this drop. What is this query? Drop table name will help you drop the table. और डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डेटाबेस name. Okay. Can we drop columns as well using drop? No, I mean you cannot straight away delete a column using this drop command. Okay, you have to add this drop keyword or drop command with the alter table statement, because अगर आप column को drop कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? We are changing the table structure, right? So we need to define that. We need to tell that to the database system कि I want to change the table definition to drop a particular column. Got it. Okay. So that was all about DDL commands we saw. Next है आपका DML and next was this DQL. And DML plus DQL are commonly referred as crude operations. Okay, मतलब ये crude operation is not the combined name of DML and DQL commands. Okay, I'm not saying that. DML commands कौन से हैं आपके? Insert, update and delete. And what is this DQL? It is select. Okay, so ये चारों commands use करके जो operations हम perform कर सकते हैं उनके लिए we have this shortcut we can say, that is crude, which stands for creating data, that's insert, read data, which is your select, then we have update data, uske liye command is update, and lastly delete the data, and the command we have for that is delete. So you need to always remember, so if you observe these words alter and update, तो ये दोनों का मतलब सेम है. इंग्लिश मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों का मीनिंग सेम होगा, बट ऑल्टर विल ऑलवेज बी यूज्ड इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस. स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं तो ही हम ऑल्टर यूज करेंगे. डेटा को अपडेट करना है, डेटा को मॉडिफाई करना है, यूज दिस अपडेट कमांड. सेम गोज फॉर योर ड्रॉप एंड डिलीट. तो इन दोनों वर्ड्स का इंग्लिश मतलब सेम है, बट drop will always be used with the, in the case of structural things, table को drop करना है, column को drop करना है, structural changes we will be using drop, and data को delete करना है तो we will use delete statement. So as we all know, it's a relational database, so we will always have two things. One is your structure and the other is your data. So all the DDLs will deal with the structure and DMLs will deal with the data. Even this. Okay, so crude operations. सबसे पहले आपका creating the data, उसके लिए query we wrote is, the command we have to use is this insert command. टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है, सो इंसर्ट इनटू योर टेबल नेम
उस टेबल की कौन सी कॉलम में आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है, दोस कॉलम नेम्स एंड दी corresponding set of values. Okay, so this is the simple insert statement we can have to add or to create data into a relational database table. Okay, now what is the basic rule to write this insert statement? Okay, what is the basic rule to perform this insert? In which case this will give us an error? into table name. If the number of columns and the values are not equal to same. Correct. Okay, so the basic thing we need to keep in mind while writing our insert statements is we need to always have number of values equals to the number of columns we are mentioning here. Okay, and another valid syntax of inserting data into a table is we can skip writing these column names. Provided अगर आप यहाँ पे column names नहीं लिख रहे हो तो you need to give the values for all the columns you have in that particular table. So those values can be an actual value or a null, but you have to specify the equal number of values, how many columns you have in your table, those many values you have to provide here. Okay, so that's another valid query we can write to insert data into a database table. Next operation we saw is this how to read data from database tables, and the command we used for that is your select command. So what is the simplest select query everyone can write if I have to read all data from the table? Star. Select star and table name. Okay. Select star from table name. Table name. table name. Now, can anyone explain what all these things, what all these clauses specify in this particular query? Select आपका क्या decide करता है? Read Column command. needs to be selected. Column names. Column names. Okay, select is used to read the data, that is fine, but what exactly is specified after select? That is column output. Okay, आपके आउटपुट में कौन सी कॉलम्स होनी चाहिए, that will be decided with the help of this select clause here. Now, what is the meaning of writing star over here? Which all columns we are trying to select? All columns of the table, and then we have this from clause which helps us Which table we want? Specify. सोर्स, कौन सी टेबल से आपको डेटा रीड करना है, आपका डेटा सोर्स क्या है, आप कहां से डेटा रीड करना चाहते हो, दैट कैन बी स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रॉम क्लॉज हियर. Okay, now if we have to read specific columns, what we will change here? Column names. Instead of star, we will put column names and then it's from table name. Now, what do we have for reading specific records of the table? We have this where clause. Where clause actually क्या करता है? It works on row level data and it is used to access specific rows of the table. Okay, तो where clause जब भी आप आपकी query में add करोगे, that will help you access specific rows of the table either to read, to update or to delete them. So what is the meaning of this statement now? Can anyone tell me? Where we can use in all the commands, read, update, and delete. Correct. So this where clause is what we can say can be common between insert, update, and delete, all the DML operations. So you can use this where clause with all of these commands. So if you are combining where and select, we will be able to read specific rows. If you are combining update and select, we will be able to update those specific rows. And if you are combining delete with select, we will be able to delete those specific rows from the table. So that is your
where clause, and it will always work on the row level data. That means whenever whatever where condition we have, we are adding in our query, database will check each and every row of your table to see if that is satisfying the condition we have given in our query. ठीक है? How to combine multiple where conditions? Help of operator. Logical And then or. operation. Correct. Logical operators. Using and this or, we can combine multiple where conditions. So what does this and represents? अगर आप multiple conditions and से combine करते हो तो उसका मतलब क्या होता है? Both are true. Okay. So all the conditions specified should, all the conditions given should be satisfied by a row of your table. That is what and says. Okay. और का मतलब क्या होता है? Either of the condition. जितने भी conditions हमने दिए हैं उसमें से कोई भी condition अगर आपकी row satisfy कर रही है, it will be there, that row will be there in the output. Okay. So you can combine, you can have n number of conditions as per your use, and you can club all of them using either and or this or operator. Okay, so that is your where clause. Next, now what is the what is the way to add this where clause in your select query? Select star or the column names. कहाँ पे ऐड करेंगे हम हमारा where clause? That is from table name. So this is your data source, but ये पूरा का पूरा data source जो है वो पूरा data हमें read नहीं करना, उसमें से सिर्फ ऐसा data read करना है जहाँ पे जो भी rows आपकी इस condition को satisfy करती हो. So select again will decide, or we can choose which all columns we need to have in the output by putting their names or star in your select clause here, and then the required where condition. Okay, that's about select command we have. So that is the basic things, basic queries we can write using select. Okay, इसके आगे भी we will be writing multiple select queries, select statement to perform different things in the database. Okay, next हमने देखा था how to update the data. The command we have for that is update. What is the syntax for updating data here? Update. डेटा को अपडेट क्या क्वेरी लिखेंगे हम? Update table name, set column name. सिंपल. ओके, सेट कॉलम नेम और उसका जो भी न्यू वैल्यू आपको देना है दैट वैल्यू वी कैन गिव. व्हाट इफ आई हैव टू अपडेट मल्टीपल कॉलम्स यूजिंग अ सिंगल अपडेट स्टेटमेंट? हाउ टू डू दैट? सेट के बाद कॉमा देना है, कॉलम दूसरा कॉलम में डालेंगे. इसके बाद यू विल जस्ट ऐड कॉलम 2 and its new value. Likewise, you can update n number of columns of the table using single update statement. But this update statement will help you update multiple columns of all the rows of the table. Okay. Now, if I have to update multiple columns of specific rows of the table, what we will have to do? We will be adding this where condition to your update statement. Okay. Then we also discussed about case statement we have in SQL. So what does this case statement do? Actually क्या करता है ये case statement? It what we can say is it helps us it helps us update records based on a condition, we can say. करना है तो we can make use of this case statement here, and the syntax for that is update table name set. So this much will remain common. Okay, we are updating the table. किसी column का value आप set कर रहे हो, that column name, कौन सी value का value आपको, sorry, कौन सी column का value आपको set करना है, that column name. But here instead of a direct value, what do we have is a case statement, a conditional update. तो केस जो भी कॉलम पे आपको कंडीशन लगाना है
what we can see here is condition column name. ठीक है, I hope you will be able to understand if you are reading it later. ठीक है, जो भी कॉलम पे कंडीशन लगाना है उस कॉलम का नाम, when, then, okay, whatever the value you want to set for this particular column. If needed, we can add this else part. In else, we can either have a single value, whatever it is, or you can have the column name itself. This column name itself, if you do not want to disturb other rows apart from these two, okay, and you need to end this statement, in this case statement, with the keyword called end, which is mandatory. Else is not mandatory, but end likhna mandatory hai if you are starting a conditional update or starting a case statement. Okay. And lastly, we saw how to delete data. उसके लिए the command is delete, and the query we can write to delete all the records of the table is delete from table name, which will be as good as truncate table name statement. What is the difference we have between delete and truncate? It will delete only the data, but delete will also delete the single row. And delete Truncate. delete will specify. Specific rows. Correct. Okay. So Truncate is auto committed. It is faster truncate. yeah. So three of the differences we have. First thing is truncate is DDL, which is auto committed. Delete is DML, which can be auto committed but cannot be also. Okay. It depends on how your database is configured. Second difference we have is truncate works faster than your delete statement. Or third thing, we can delete specific records using delete. And that is because we can have this where condition added along with this delete statement, which is not allowed if you are using truncate table name. Truncate के साथ हम where condition को add नहीं कर सकते, whereas it is possible with the delete statement. Okay, clear everyone? Yes, sir. And then, so till here, we were just seeing how we can store our data into a database system. Data को store कैसे करें, उसे update या delete कैसे करें. So these basic things we saw, which can be helpful in case of you are having database at the back end of your APIs. Flask के case में these things may help you. Otherwise, in your regular activities of a data science project, you may have to interact with the database, and there you might need to write any of these queries. ठीक है, अभी ये हो गया how to store your data into the database table. Now next goal was to manage the data we have stored, and to manage it, to keep our data clean, to keep it consistent throughout the tables. What do we have here in SQL is different constraints. Okay, what do we understand by constraint? Rules or limitations. And what all constraints we discussed in our previous class? कौन से constraints हैं SQL में? Unique, Not null. primary key, foreign key, default, check, auto increment. Default. Then we have this check, and then we have this auto increment. Okay. So this unique constraint, अगर आप कोई टेबल पे यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हो, किसी कॉलम को आपके टेबल का यूनिक की डिफाइन करते हो, तो व्हाट डज दैट मेक्स श्योर कि you have restrict the entry of Duplicate values. duplicates. ठीक है, अगर आपने किसी कॉलम को
यूनिक की बनाया है तो you won't be able to insert any duplicate value in it. But here nulls are allowed. Why nulls are allowed? Multiple nulls are allowed in unique key. What can be the reason behind this? Constraint. If we combine both, then only we can consider it as Every primary. null is a distinct. It is unique. Every null is unique. Null is not considered as a duplicate. Okay, so basically the correct way to say this is your unique key column will allow you to insert multiple null values is because a null cannot be compared with another null. Okay, so a null cannot be considered as the duplicate of other null, and that is why your unique key allows us to insert multiple null values but not duplicate non-null values in that particular column. Not null क्या करता है? It restricts the entry of null value. null values. And then what is primary key? Unique and Not null non-null. plus unique. So it's basically not null plus unique. And the primary use, the basic use of primary key columns or primary key values is to, what is the basic use of this? Identify a row. Identify a row or entity uniquely. Okay, then we have this foreign key which is used to define relationship between tables. Then we have this default constraint. What is the use of this default constraint? To set If default no value. values are set. Set default value for column. Define relationship between. बाय डिफॉल्ट अगर वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हैं तो नल पॉपुलेट होता है, उसकी जगह कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना है तो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट. चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है? चेक्स फॉर अ कंडीशन बिफोर इंसर्टिंग डेटा इनटू अ टेबल. ओके, तो जो भी वेयर कंडीशंस हमने देखे वो सारी कंडीशंस हम यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट के साथ ऐड कर सकते हैं. But this constraint will make sure that whatever data we are inserting, that is satisfying the condition we have given along with this constraint. ठीक है? And lastly, we have this auto increment, which will help you increment a column value by 1. And it is mandatory to define it as a, कोई भी कॉलम को अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट करवाना चाहते हो तो इट इज मैंडेटरी टू डिफाइन इट एज अ key. Okay, everybody able to recall these things? We already discussed the use of all of these constraints, right? Yes, ma'am. मैम मुझे मॉक में पूछा गया था कि एसक्यूएल और पांडास में डिफरेंस क्या है, तो मैम इसमें डिफरेंस क्या है? बिकॉज दोनों का तो वर्किंग सेम ही है ना. वर्किंग विल बी सेम बिट पांडास और एसक्यूएल का, but pandas में we will deal with data frames. Here in SQL we will deal with tables, right? We are dealing with the database server basically. Data frames आपकी कहाँ पे सेव होती है? सर्वर पे समथिंग. No, which server? मैम इतना नहीं पता. हाँ नहीं, डेटा फ्रेम्स मेरे ख्याल से कोई सर्वर पे सेव नहीं होती है, whereas databases are, it's a client server architecture. And if you think about data frames and relational databases, your relational database will always be faster than your data frame. So if you have you ever tried loading like even around 50,000 records into a data frame? यस मैम, वो पांडास के ऊपर ऑपरेशन किए ना हमने. हाँ, बट आपने कभी ऐसा ह्यूज डेटा सेट डेटा फ्रेम में लोड करने का ट्राई किया है? नो. No, right? Try it once.
it will take a lot of time. Sometimes हो सकता है कि आपका वो process stuck भी हो जाए, so that is very slow. But if you query a database table even with millions of records, you will get result within few minutes or few seconds, I would say. Okay, so performance wise we can say databases are really faster than the pandas operations. Okay, now मैम जो हमारा मशीन लर्निंग में वर्क होता है वो तो पूरा डेटा फ्रेम बना के ही होता है. yes, that's तो डेटा लोड करके वो डेटा फ्रेम में ही कन्वर्ट करते हैं. correct, but okay, it won't be the case. Okay, let's just discuss about this data gathering. Okay, एक second guys. Okay, sorry. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस डेटा गैदरिंग. एक्चुअली क्या होता है, ठीक है. सो व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, देयर कैन बी अ सेपरेट डेटा इंजीनियरिंग टीम, या फिर हो सकता है कि आपको ही ये डेटा गैदरिंग पे काम करना पड़े. बट व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डेटा गैदरिंग इज, क्लाइंट वोंट बी शेयरिंग अ सिंगल डेटा सेट विथ यू. जैसे आप डेटा सेट्स पे अभी तक आपने काम किया होगा, लाइक कैगल से डाउनलोड किया होगा, ड्राइव से लिया होगा. सो दोज आर लाइक प्रॉपर डेटा सेट्स विच आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्टडी पर्पस, राइट. तो वो बहुत ही लिमिटेड डेटा है, उसमें बहुत कॉम्पैक्ट डेटा सेट्स है, आप बोल सकते हो रेडी टू यूज टाइप्स. बट एक्चुअल डेटा आपका कभी भी ऐसे नहीं होगा. इट विल बी अ वेरी रैंडम रॉ डेटा. एंड क्लाइंट डजंट अंडरस्टैंड दी डेटा साइंस अप्रोच, राइट. उनको नहीं पता होता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन यूजफुल होगा मॉडल बिल्ड करने के लिए, कौन सा नहीं होगा. दे डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. सो व्हाट दे विल डू इज they will just share whatever they have, and let's say that data is present in 40 different tables in a database. Now how they'll share the data, they won't be sharing it in CSV files. ओके, सो दैट्स अ वेरी 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 रेयर केस कि 2 to 3% हो सकता है कि उनका बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है और उनका डेटा एक्सेल या सीएसवी में आ सकता है, तो दे कैन शेयर दैट डेटा इन सीएसवी फाइल्स. बट 97% your client will use databases to share the data with us. ठीक है, and let's say that data is there in 40 different database tables. Now, as a data scientist or as a data engineer, we know that everything which is stored in this 40 tables is not useful for building a model, right? So what we will have to do is, first thing, हम क्या करेंगे, we will have to read all these 40 tables. Now, when you read all these 40 tables, you got to know that only 5 tables have the important data, we can say, जो आपके मॉडल बिल्डिंग में जरूरी हो सकता है, लग सकता है. So that data is there in only 5 tables out of 40. So how much data is reduced in this phase, in this process? So we had 40 different tables. Now we are just left with 5 tables. So when you query these 40 tables in a database, even if these 40 tables have millions of records, you will be able to query them, like you will be able to read all the data, you will get your results within seconds. But if we'll try to read, okay, so that is very easy to read a table, a database table, using your pandas ka function and get that data into a data frame. But when you try to read a very large table from there, it will take a lot of time, and there is no point doing that, right? Whereas you can do that activity here in the database level itself.
तो हम क्या करेंगे, we will read all those 40 tables first. So after looking at the data, we could what we can say, we could analyze that only 5 tables have the important data. Now how to decide that only 5 tables are having important data? Based on your based on the primary knowledge. ओके, डोमेन नॉलेज के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ओनली 5 टेबल्स जो है उसमें आपका यूजफुल डेटा, उसमें का डेटा आपके लिए यूजफुल हो सकता है. नाउ अगेन you won't be the only person doing all these things. You won't be the only person deciding कि ये 5 tables में ही आपका important data है. Okay, you may have your domain experts in the team, you may have a separate data engineering team जो इस पे काम करेंगे, but you may have your seniors. Everybody will think and decide कि कौन सी tables हमारे लिए useful हो सकती हैं. And these 5 tables are important for us. Let's say, so this is table 1, table 2, table 3, table 4 and table 5. Okay, तो ये 5 tables हमारे लिए important है. Now this table 1 has 10 different columns, table 2 has 5 columns, this has 8. N number of columns you can have in a table. This again has 10 columns and this again has 15 columns. Okay, अभी जरूरी है क्या कि इस टेबल में क्लाइंट ने कुछ 10 कॉलम्स सेव किए हैं, तो ऑल दोस 10 कॉलम्स विल बी यूजफुल फॉर अस? नो, राइट? बिकॉज अगेन दे डू नॉट अंडरस्टैंड आवर अप्रोच. सो व्हाट कैन बी द केसेस? इसमें से फॉर एग्जांपल 5 कॉलम्स आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है. Out of these 5, all 5 are important. Out of these 8, let's say all 8 are important. So when I say important, consider it as relevant, okay, which has the useful data. Out of these 10, 7 columns are important. And out of 15, again 10 are important. So how many columns we have in total in these 5 tables? Total कितने columns है ये पांचों टेबल में? 10, 10, 35, 48. 48 ना? Okay, so total 48 columns we have, but how many are actually relevant to us? 26. नहीं, 28, 36. 30. 35. 35. जो भी है कैलकुलेशन, ठीक है. 35 columns are important for us, ठीक है. Then what we are doing, we are just trying to get only the required amount of data from the database itself. So how will you read data from all these 5 tables combinedly? You will have to join all these 5 tables and then select only the required columns from those tables. And whatever the final output we will get after joining these 5 tables and selecting 35 columns from it, what we will do is we will get the output of the join query in a data frame. To proceed, और जैसे ही आपका डेटा फ्रेम में आता है, then you will proceed with your feature analysis. Okay, so once you will do your feature analysis करने के बाद you realize कि out of these 35, even 5 more columns you can drop. Those are not relevant. Okay, we do feature analysis for that purpose only. ठीक है, तो उसके बाद हमें लगता है कि इसमें से और 5 columns भी हम रिमूव कर सकते हैं, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है. So what we will do, we will just update the select to have only 30 important columns after feature analysis.
यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डेटाबेस लेवल पे ही we will fetch, we will do the feature analysis in अपना Jupyter notebook using Python का code, but after getting to know कि out of these 35, 5 more can be dropped, we can straight away drop it from our database itself. हम हमारा सिर्फ query update करेंगे, उसका select update करेंगे to have only 30 important columns after feature analysis. And once you have this data frame, what will be our next step? Feature selection. हेलो मैम। Feature selection and then model. EDA. हाँ, yes. हमें जो 5 टेबल मेंशन किए हैं, तो ईच एंड मतलब इंडिविजुअल टेबल का हमें IMP कॉलम्स लेने पड़ेंगे क्या? Yes, yes. इंडिविजुअल टेबल। Yes. ओके। Okay. तो to summarize this data gathering phase, हमारे पास सबसे पहले क्या था, 40 डिफरेंट टेबल्स थे, जिसमें आपके हो सकते हैं n नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं। उसमें से हमने क्या किया, वो सारे टेबल्स रीड किए एंड देन वी रियलाइज्ड और वी अंडरस्टूड कि आउट ऑफ 40 ये जो 5 टेबल्स है उसमें ही आपके लिए रेलेवेंट या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे, वी विल ज्वाइन दीज 5 टेबल्स। अभी हमें क्या करना है, हमें एक ही डेटा फ्रेम चाहिए, राइट? तो we will join these 5 different tables, जिसमें अभी टोटल 48 कॉलम्स है। एंड इफ यू कैन रिकॉल, मैंने बोला था कि सिलेक्ट स्टार जब आप लिखते हो, दैट मीन्स वी आर सिलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स, एंड इट विल बी द केस your select will only decide the columns in the output, even if you are reading data from a single table or you are reading data from multiple tables after joining them. तो टेबल्स को ज्वाइन भी करते हैं तो भी आप सिलेक्ट में क्या क्या लिखते हो उसी पे डिपेंड करता है कि आपके आउटपुट में कौन सी कॉलम्स होंगी। सो इफ यू ज्वाइन दिस 5 एंड राइट स्टार इन द सिलेक्ट, what you will get all these 48 columns in the output, which we do not want. What do we want is these 35 columns which are having relevant information. So we will just update our select to get those 35 columns in the output. Abhi yahan se aage you will have to deal with the data frames, but till this phase also we will be saving a lot of time and lot of efforts to gather your data. Now to perform these things, you may have a separate data engineering team. ऐसा हो सकता है कि data engineering का एक अलग team हो and they will just give you the final table which has this thing 35 columns and like just the required amount of data. So they can either write a join query and they will give you that query so that you can run that query and get its output into a data frame, or they will save that query output into a database table itself and they will give you the table name so that you can use that data to perform, to build your model, whatever the procedures you have later in a data science project, whatever the steps you have. Okay, understood? So that's basically a data gathering phase. मैम एक डाउट है इसमें, जो हम अभी ज्वाइन करेंगे जो 35 नंबर्स कॉलम, तो उसमें जो कॉलम नेम्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे ना, ईच एंड इंडिविजुअल टेबल जो हम अभी इंडिविजुअल IMP टेबल्स निकाल रहे हैं उसमें से, सो उसका हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो 35 कॉलम हम ज्वाइन करेंगे तब उसका कॉलम नेम सेम ही रहेंगे? नो ओके ओके। तो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं उसका मतलब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय टेबल है आपका, एम्प्लॉय आईडी जिसमें है आपका एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एंड यू डू हैव अ प्रोजेक्ट टेबल जिसमें यू हैव प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम. Now why exactly we join this? Because what do we want in the output? We want this employee ID, employee name, project ID and project name in a single what we can say, as a single table or as a single data frame. हमें एक ही डेटा फ्रेम में ये चारों फीचर्स चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, we have to join these two tables. So that joining condition can be this employee ID. Okay, I'll just add this employee ID over here.
तो अभी हमें हमारा आउटपुट कैसे दिखना चाहिए, एक रो में ये सारे वैल्यूज हमें दिखनी चाहिए, 1001 ये नेम एंड प्रोजेक्ट आईडी एंड project name. So this kind of output we want to have. Okay, Okay. मैम लेकिन वो कॉमन नहीं होगा कॉमन कॉलम उसमें, तो कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, अगर ज्वाइन करना है तो देर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन टेबल्स, अदरवाइज यू कैन नॉट ज्वाइन इट, राइट? किस बेसिस पे आप ज्वाइन करोगे, किस बेसिस पे आप इस डेटा को इस डेटा के साथ रिलेट करोगे? So that won't be the case. Okay, that what we can say is that can be a data issue or requirement issue, but you should have a column which is having common values between these two tables. Even if you are not having any common values in those columns, आपके join query में कोई error नहीं आएगा. You can still join the tables, but you'll get 0 records in the output, which doesn't make any sense. हमें कमेंट डाल सकते क्या उधर आप कि जब ज्वाइन करेंगे उस टाइम क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? वो हम एक्चुअली जॉइंस जब सीखेंगे तब देखेंगे इन डिटेल. ओके. कॉलम्स कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए ना बस? हाँ, कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए और ओके दैट्स इट. ज्वाइन करने के लिए कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए और उसकी वैल्यूज एक्चुअली मैटर करती है. सो व्हेन आई से दिस, एट्रीब्यूट का नाम मैटर नहीं करता. अगेन आई एम सेइंग दिस, कॉलम का नाम क्या है वो मैटर नहीं करता, बट इट विल ऑब्वियसली बी समथिंग रेलेवेंट, बट उसमें वैल्यूज क्या है वो मैटर करता है टू परफॉर्म दैट ज्वाइन ऑपरेशन. ओके, now let's talk about constraints. So the very first constraint, okay, we are going to see the implementation of these constraints, which is very easy. ठीक है, तो अगर आपको ये पहला वाला इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया तो आपको बाकी के सारे भी बहुत इजीली समझ में आएंगे. सो विल बी लिटिल क्विक टू अंडरस्टैंड दिस इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, सबसे पहला है आपका नॉट नल. सो वी विल सी हाउ टू अप्लाई दिस कंस्ट्रेंट व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल, और जैसे हमने डिस्कस किया एग्जिस्टिंग टेबल पे भी कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे. नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दिस व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल. नाउ again we are creating a table. So create table, आपका table name जो भी है, let's say nm, and you need to have all of these columns in it. Okay, so ये हो गया आपका बेसिक टेबल डेफिनेशन जो अभी तक हमने लिखा है. इस टेबल में हमने अभी तक कोई भी रूल सेट नहीं किया, बट नाउ व्हाट इफ आई वांट टू मेक श्योर दैट ये जो एम्प्लॉय आईडी है आपका वो कभी भी नल नहीं होना चाहिए. तो व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट ऐड दिस नॉट नल कंस्ट्रेंट, नॉट नल कीवर्ड इन दी कॉलम डेफिनेशन. Okay, column name, data type and the constraint we want to apply. Same way अभी salary भी कभी null नहीं होना चाहिए, वो make sure करना है तो क्या करेंगे, उस column definition में भी we will add this keyword called not null. So this way we can apply this not null constraint on n number of columns of your table. कितने भी columns पे आप ये not null constraint लगा सकते हो according to your use. Now let's execute this create table. Now if I have to see if that constraint is applied or not on this table, what query we should run? DESC table name. Okay, we will have to describe the table, describe employee nn आप अगर करोगे तो now if you can remember या फिर we can simply describe the student table. Okay, ये जो स्टूडेंट टेबल हमने क्रिएट किया तभी हमने कोई भी रूल अप्लाई नहीं किया था. वी हैव नॉट स्पोक अबाउट कंस्ट्रेंट्स एट दैट टाइम. सो व्हाट इट सेज, null is allowed in all the 3 columns we have. Yes, 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 for all the 3 columns. But now if you go and describe this employee NN table, what it says, there are no null values are allowed in this employee ID, और salary भी आपका जो है वो कभी भी null नहीं हो सकता है. Okay, so the implementation of these constraints is very easy, but those are
useful as well. Now let's understand how exactly that restricts the entry of null values. Let's try and insert a value or record into this employee NN table. Insert into employee NN values. Okay. पहले हम एक नॉर्मल वाला रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखेंगे. एम्प्लॉय आईडी है आपका 1001, एम्प्लॉय नेम इज दिस एंड salary is this. Let's say. So this record will get inserted. Select star from this employee NN अगर हम करेंगे तो we will be able to see this record added here. But जैसे ही you will try to insert null at the place of employee ID, okay, earlier हमने ऐसा किया था तो we have not got any error, right? But now if I try to execute this, what is the error we are getting? Column employee ID cannot be null. Okay, तो ये क्योंकि हमने employee ID पे not null constraint लगाया है, you cannot have null value in it. Same goes with your salary now. So if I'll try to insert null in the place of salary, it will throw us an error. Column salary cannot be null. Okay, so this is the message we will get at the backend. Database level पे ये वाला error आएगा. But what do we see at the front end? अगर आप कोई mandatory field में value insert नहीं करते हैं तो क्या error आता है? क्या message display होता है? Required field. Correct. Please fill the required field. So whatever is the whatever statement or error message given by a developer, वो वाला error message वहाँ पे display हो जाएगा. But that ultimately means कि वो field जो है वो आप खाली नहीं रख सकते, because that is defined as at the database level. ठीक है? So ये हो गया how to apply a not null constraint on a table while creating it. Now if I have to apply this constraint on the okay, तो ये student table we have और इस table की roll number field पे we want to apply this not null constraint. What command we can use to do that? After table name and modify. Yes. So we have to use alter table, your table name. क्योंकि we are modifying a column definition, the keyword we need to use is this modify column. और वो modification क्या है? That I do not want to have any null values in this roll number field. So उस column का नाम, data type and simple this not null keyword along with the column definition. तो जो column definition हमने यहाँ पे लिखा है, same thing we will write over here also. But the only difference is यहाँ पे we are creating a new table itself और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी existing table को alter कर रहे हैं to have this constraint on it. Okay. Now if you go and describe the student table, it will also say that null values are not allowed in this roll number field. Okay. तो अभी आप यहाँ पे student table में roll number null insert करने जाओगे तो भी we will get an error. Now ये हो गया how to apply a constraint. What if I have to drop a constraint? ये drop not null हमने लगाया, but उसे अगर drop करना है तो क्या करना पड़ेगा? You said same process, alter table student modify column name, then just don't write null. Correct. ठीक है. So same thing, same alter table query. क्योंकि हम फिर से टेबल का डेफिनेशन मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कॉलम, एंड यू जस्ट नीड टू राइट अ कॉलम डेफिनेशन हियर विदाउट नॉट नल कंस्ट्रेंट. If you'll execute this, describe this table, that constraint is now gone. Okay. Same way, अगर हमें this thing employee NN table से इस constraint को हटाना है तो हमारा query क्या होगा? Alter table employee NN modify column. What was that? Employee ID and date. Column definition without the keyword. That will help you remove this not null constraint. Okay. Clear everyone? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am.
Now next constraint we need to see is this unique constraint जो कि हमें help करता है to avoid duplicate values, duplicate data in a table. Okay, let's first understand how to apply this while creating a table. So the syntax will remain same, exact same. So this is the normal table definition again. This may we do have a column called contact, which is var_cat_in. Okay, और अभी हमें क्या करना है? I want to define this contact as the unique key of the table. Okay, make sure करना है कि ये जो contact है उसमें कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इफ यू सी मोबाइल नंबर में अगर एक भी डिजिट चेंज हो जाता है दैट मोबाइल नंबर, दैट कॉन्टैक्ट कैन बिलोंग टू सम अदर पर्सन. So that data is basically wrong data, right? So here, to make sure that nobody should by mistake insert some wrong duplicate mobile number, I want to define this contact as the unique key of the table. So again, हो सकता है कि if it is an employee database, हो सकता है कि हमने database में हमारा contact number, mobile number add नहीं किया, तो it can be null, but it should never be a duplicate value. Okay, even if we also we discussed about the thing because of which we cannot have Amazon या फिर कोई भी साइट पे अकाउंट मल्टीपल टाइम्स आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते यूजिंग अ सेम मोबाइल नंबर. ओके, दैट इज बिकॉज मोबाइल नंबर जो है उस डेटाबेस का यूनिक ही डिफाइन किया गया होता है. ठीक है, सो टू डिफाइन दिस कॉन्टैक्ट एज द यूनिक की ऑफ योर टेबल, what you just need to do is add this unique keyword in the column definition. ओके, जैसे नॉट नल ऐड किया वैसे ही यूनिक भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे. अगेन नॉट नल जैसे मल्टीपल कॉलम्स पे ऐड किया जा सकता है, वैसे ही यू कैन हैव मल्टीपल यूनिक कीज इन अ सिंगल टेबल. You can have this unique constraint applied on multiple n number of columns of the table. Let's execute, sorry. So we have to change the table name also. So this table employee unique got created. So if you'll describe this employee unique table here, it says employee ID and contact are the unique keys of this table. So this information, unique key, primary key, foreign key, all that information will be here in this particular field of DESC output. Okay, तो अभी क्योंकि हमने ये दो कॉलम्स को इस टेबल का यूनिक ही डिफाइन किया है, हम उसमें कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे. सो इफ यू try to insert this very first record into this table, insert into employee unique, values are these and contact. Okay, ये वाला रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो जाएगा. Okay. Now what if I'll try to execute the same insert statement once again? इसका मतलब क्या है? I am basically trying to insert duplicate employee ID here. नया एम्प्लॉय मेरी कंपनी में ज्वाइन किया है उसने, बट फिर भी मैं क्या कर रही हूँ? आई एम जस्ट गिविंग him or her an employee ID which is already there in the database. किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी है वो ऑलरेडी, वो ही हम किसी नए एम्प्लॉय को असाइन कर रहे हैं. दैट शुडंट बी अलाउड, राइट? तो if we will try to insert this record now, it will give us an error that duplicate entry 1001 for key employee ID. Okay, क्योंकि employee ID is the unique key of your table. Now, if I change this employee ID to 1002 and keep my contact same 1 2 3 4 5, it will give us an error for the contact field. Duplicate entry 1 2 3 4 5 for contact. Okay, but now if you try to insert null values,
it will get inserted. Okay? So if you query this tables to see the data, you can have multiple null values, but you cannot have multiple non-null values in unique key column. Okay. Now ये हो गया how to apply this unique constraint while creating a table. If I have to apply it on an existing table, again we will have to write alter table statement. So alter table statement, alter table student, modify column, roll number, integer, and just this keyword called unique. That's it. Okay, so this will help you apply a constraint on an existing database table. और इस unique key constraint को remove करने के लिए we have a little different syntax. We have to use alter table. Alter table, your table name, and the keyword to drop unique key constraint is drop index. And you need to give a column name here. कौन सी column का ये unique constraint आपको हटाना है, that column you should give here. So when you do this, ठीक है. So when you do this and now describe your employee unique table, it will just have a single unique key which is contact, क्योंकि हमने employee ID से तो ये unique constraint हटा दिया है. Same goes for your student table. Student table की roll number से unique constraint को हटाना है, तो we will be writing the same query again. That is drop index and the field name. Okay, so this will help you remove or drop the unique key constraint applied on different columns of the table. So if you observe, implementation इन दोनों का syntax exactly same है, सिर्फ यहाँ पे हम not null keyword को add कर रहे हैं to apply a not null constraint and to apply a unique key constraint or to define a column as the unique key of your table, we need to use this keyword. Okay, able to follow everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let's talk about primary key we have in SQL, which is actually the combination of not null and unique. ठीक है आ जाओ. हाँ. And as we all know, these primary key values can be used or are used to identify an entity, a row, uniquely. Now again, the syntax to define a column as primary key of your table will remain same. Again, we have these 4 columns in the table, which is employee PK. And now I want to define this employee ID as the primary key of it. So what the only simple thing we have to do is to add primary key in the column definition. So this will help you define this employee ID as the primary key. और जैसे ही हम किसी column को आपकी table का primary key define करते हैं, it won't allow you to insert null value as well as it won't allow you to insert duplicate value. So let's try and insert a record here. Okay, employee PK. तो ये वाला रिकॉर्ड तो आपका इंसर्ट हो जाएगा. So you go and check the data from this employee PK table. वेरी फर्स्ट रिकॉर्ड जो है आपका इंसर्ट हो गया है. सेम स्टेटमेंट अगर हम फिर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, अगर डुप्लीकेट एम्प्लॉय आईडी इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इट विल थ्रो अस एन एरर which says duplicate entry 1001 for the primary key. Okay, same way अगर
आप इस प्राइमरी की कॉलम में नल इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, if we try to insert null in place of employee ID, it will give us this error which says column employee ID cannot be null. ओके तो अगर आप ऐसे एक्सप्लिसिटली नल लिखते हो तो यू विल गेट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर कि कॉलम एम्प्लॉय आईडी जो है आपका प्राइमरी की डिफाइन किया गया है और वो नल नहीं हो सकता है. बट यू आर यूजिंग दिस सिंटैक्स टू इंसर्ट दैट रिकॉर्ड, दैट इज टेबल नेम और कॉलम्स. तो हमारे पास we want to insert data in this employee name, salary and contact. That's it. Only these three values we have. If I'll execute this insert statement, what is the error we are getting? Field employee ID does not have a default value. Okay. So when we are using this syntax to insert a record, insert null value. Okay. अभी ये दोनों ही केस में क्या हो रहा है? Employee ID जो है वो आपका null populate हो रहा है. राइट बट क्योंकि हमने इस कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन किया गया है, we cannot insert null in it, and that but the error message we get in both of these cases is little different. If you are using this syntax, database expects some default value for that particular field, which is not the case. हमने कोई default value उसके लिए set नहीं करी है, and that's why it gives us this error. It doesn't have a default value. But अगर ये वाला syntax use करते हो तो it will straight away say कि employee ID cannot be null. Okay. और जैसे ये null नहीं हो सकता वैसे ये duplicate भी नहीं हो सकता है. कोई भी primary की column में we cannot have null values as well as we cannot have duplicate values. Okay. Now, one different thing between this primary key and the two constraints we have discussed above is we can have not null and unique applied on multiple columns of your table. There is no restriction on it, but you can have only one primary key in a single database table. एक table में आपका एक ही primary key हो सकता है because primary keys are actually used to identify an entity uniquely. So an identity should be a single value, and that's why only one primary key is allowed in a single database table. Okay. तो ऐसे आप primary key constraint को apply कर सकते हो while creating a table itself. Existing table पे apply करना है तो again what will be our syntax? Modify then column. Modify table and then column. Modify column, roll number, integer, and this keyword called primary key. That's it. Okay, so it will help you apply a primary key constraint on an existing table. इसे हटाने के लिए primary constraint को remove करने के लिए the syntax we need to use is alter table student drop primary key. Because here we do not need to mention the column name, anything else. We can just say drop primary key because we know we are always going to have only one primary key in a single database table. Okay, so this query, this syntax will help you drop that primary key constraint. Okay, so that is primary key. Not null values नहीं हो सकते, duplicate values नहीं हो सकते. Third important thing कि आप एक टेबल में एक से ज्यादा primary keys को apply नहीं कर सकते. Okay, those are the rules or those are the restrictions gets applied on the data when we define on the column when we define it as a primary key of the table. बट अगर कोई कॉलम है हमारे पास उसमें नल भी नहीं चाहिए, हमको यूनिक वैल्यू भी नहीं चाहिए और हमारे पास प्राइमरी की पहले से है तो फिर दोनों कंस्ट्रेंट लगानी पड़ेगी. हाँ, आप कंबाइन कर सकते हो इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को एक ही कॉलम में, जैसे यूनिक और नॉट नल ऐसे.
तो इन दिस केस ये प्राइमरी की नहीं होगा, मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं। Okay. Nahi, when you do that and you describe the table, it actually says it's a primary key of the table. So if you, okay, let's try that out. So we do have this table called employee, ठीक है। इस टेबल पे हम ट्राई करेंगे alter table employee, modify column, this employee ID, integer, unique and not null, ठीक है। अभी इस पे कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाइड नहीं है, ठीक है। yes 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 लिखा हुआ है, nulls are allowed, कोई की डिफाइन नहीं है। now if I'll alter this table, now describe this, what it says, it displays that it's a primary key. नहीं, बट अगर हमारे पास प्राइमरी की पहले से है, जैसे इसमें हमने बना ली है, और अगर हमको कोई और दूसरा कॉलम है, जैसे कि एक फोन नंबर का कॉलम है, उसमें हमको नोट नल भी, मतलब कोई वैल्यू नल भी नहीं होनी चाहिए, और उसमें यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि फोन नंबर हमेशा यूनिक रहता है, और हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है वो प्राइमरी की है, तो हमको अगर कंस्ट्रेंट लगाएंगे दोनों, तो बेसिकली इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, इफ यू सी इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू इज यू वांट टू मेक श्योर कि एम्प्लॉय आईडी और उसका कॉन्टैक्ट, ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, राइट। 1001 और 1234, इट शुडंट गेट रिपीटेड। 1002 जो भी इसका मोबाइल नंबर है वो, यू वांट टू हैव योर डेटा समथिंग लाइक दिस। आपका आइडेंटिफिकेशन इज योर कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो, और इट कैन बी अ एम्प्लॉय आईडी ऑल्सो। जैसे बैंक के केस में क्या हो सकता है, आपका कस्टमर आईडी और आपका अकाउंट नंबर, दोनों से आप एक पर्टिकुलर एंटिटी का डेटा को फेच कर सकते हैं, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू इन दैट केस इज you still need to have a single primary key, but that can be a combination of both of these columns, employee ID or contact. But this is actually, मतलब अगर बोला जाए तो इसे composite key बोलते हैं। Primary key is basically a single column, जैसे हमने यहाँ पे define किया। But if you are combining multiple columns to define a primary key, that is actually referred as composite key. Okay. Now, next thing we need to discuss is this foreign key constraint we have, which is actually we used to define relationships between the tables. So there can be multiple types of relationships. One of them is one-to-one relationship. Second is one-to-many relationship. Many-to-one and many-to-many, which is not implemented, which is rarely implemented, we can say. Rather नहीं ही होता है, but you can have 3 of these kind of relationships between different database tables, and these relationships can be defined with the help of primary and foreign keys you have in a table. So let's consider an example of student and course table we have. So किसी class का या किसी college का database है, and they have these tables store their data. Okay, student का roll number है, student name you have, and you have this location, and then you have this course table जहाँ पे आपके course का information save है कि आपकी class में कौन सी courses available है. So course ID, it can have course name. Now this is the data we have. 101 student name is this, location is this. Abhi, this student is doing which course, that information I need to store here in the course table. तो हमें क्या करना पड़ेगा? We have a course of data science whose ID is 10.
and I want to save that, I want to store that Rohit is doing a data science course here. So uske liye what I need to have, I can have this roll number field here and I can add this 101 value, so that if we will read both of these tables once, we can say that 101 roll number वाला कोई student है जिसका नाम रोहित है, he is from Pune and he is doing a data science course here. Okay, so we are trying to relate the information we have between these two tables, student and course. Now what happens is, what can happen is, by mistake we can insert 101, 001, any value in this roll number field. And to avoid this thing, okay, so in simple words, if we have to understand, इस कोर्स टेबल में सिर्फ ऐसे स्टूडेंट का डेटा जाना चाहिए जो स्टूडेंट आपके बैच में है. सो बेसिकली आपके बैच का अगर डेटा सेट मुझे बनाना है, तो what I'll have to make sure that I'm adding only the students from your batch in this course table. जितने रोल नंबर्स यहाँ पे है इस स्टूडेंट टेबल में है, उतने ही रोल नंबर्स यहाँ कोर्स टेबल में जाने चाहिए. And to define that, to make sure that, what we have to do is, we have to define this roll number as the primary key of this table, and that primary key we can refer to define foreign key for this course table. So a table with primary key is referred as parent table. जैसे parent class and child class होता है, वैसे ही ये आपकी parent table है जहाँ की values हम refer करेंगे, जिसकी property हम inherit कर रहे हैं to define this foreign key constraint here, and that's why this can be referred as your child table. Okay, any column cannot be used as the foreign key. It should be the primary key of the table, and then only आप इसे as foreign key यहाँ पे use कर सकते हैं. Now, what exactly happens when you have this kind of relationships between tables? Now again I am saying, जरूरी नहीं कि primary और foreign key relationship define हो to perform the join. You can still join the data, you can still join the tables to get the relevant data from multiple tables by looking at the columns. You have data in those columns, but what exactly happened when you have defined this relationship defined is, database makes sure that, let's say you have all these what do we say, roll numbers in student table. So स्टूडेंट टेबल में सिर्फ इन 5 स्टूडेंट्स का डेटा आपका यहाँ पे सेव्ड है, तो यू कैन नॉट हैव, you can have either of these roll numbers, either of these students in your course table. इसमें से कोई भी roll number value आप course table में insert कर सकते हो, but जैसे ही you try to insert 106 which is not there in your student table, database will give you an error. यहाँ पे we are not allowed to insert a value in your foreign key column which is not there in your primary key column. So that's how we are making sure that data is consistent, valid throughout the tables की ये जो students है वो आपकी class में है, and that is why their data is there in the course table. We are making sure that whoever is working on the course table should not insert a false value for this roll number field, because it is not allowed itself. अगर वो roll number आपकी primary key table पे present नहीं है, nobody will be able to insert this in the child table. Now what if we again have these 5 roll number values in the student table? ये 5 roll numbers आपके student table में हैं, out of which you have added this 101, 102 and 103 in the course table, in your child table,
and now you're trying to delete this 101 from your parent table. What is this scenario now? That's again as good as having a value in child table which is not there in your parent table, right? तो अगर आप parent table से ये वाला record delete करने की कोशिश करते हैं 101, it will also not be allowed, because that will again be as good as having a value, having a roll number in your child table which is not present in your parent table. Okay, so you cannot delete anything directly from the parent table if it is already present, if it is already inherited by your child table. So again what we are making sure कि दो अगर डिलीट होना ही है तो दोनों टेबल से हो, बट अगर प्रेजेंट रहना ही है तो दोनों टेबल में हो. एंड दैट्स हाउ वी आर कीपिंग आवर डेटा कंसिस्टेंट थ्रू आउट द टेबल्स की जितने स्टूडेंट्स है उतने स्टूडेंट्स का यहाँ पे कोर्स टेबल में जो है आपका इंफॉर्मेशन ऐड रहना चाहिए. सो दीज टू थिंग्स will take place when we define this primary and foreign key relationship. Let's quickly understand how to have this foreign key constraint on a table. So let's create a table called course. Okay, create table course in which we do have all these columns. Course ID hai aapka, then you have course name, and then you need to have roll number which is integer. Okay, और अभी हमें क्या करना है, इस roll number field को we want to define as the foreign key of this table. So the syntax to add this column as the foreign key is foreign key. क्या है वो foreign key? What is the field name of that foreign key column? Roll number. That should be the column name you have in your child table. So I have deliberately given roll underscore number in the, so we already have the student table and that's why we started creating this course directly. ठीक है, student table हमारे पास already है जिसमें roll number, roll underscore number नाम है. Okay, and here we have given roll number, and as we all know that doesn't matter, name doesn't matter to define PK and FK relationships. ठीक है, फॉरेन की कौन सी कॉलम का आपको फॉरेन की डिफाइन करना है? दैट इज रोल नंबर. दैट शुड बी द कॉलम फ्रॉम योर चाइल्ड टेबल. And to define this foreign key, what values we are referring to? We are referring to the roll number values of this student table. And to define that reference, we have a keyword called references. So this foreign key is referring to the roll number field of student table, and this is a simple foreign key definition we can have. Now let's try and try creating this table. बट मैम ऊपर वाले में फॉरेन की दी का है, स्टूडेंट जो टेबल आपका है ऊपर का, we haven't given any foreign key, right? वहां पे क्यों आप फॉरेन की दोगे? इस टेबल में हमें फॉरेन की डिफाइन No, I'm talking about primary key actually. अच्छा, otherwise it would have given us an error. It is okay, yeah, okay. इसीलिए नहीं तो हमें एरर आता था. ठीक है, तो now this is how we can define this foreign key here. Let's try and understand this very first scenario जहाँ पे हमने बोला कि ऐसा कोई भी वैल्यू आप चाइल्ड टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकते जो आपकी प्राइमरी की टेबल में प्रेजेंट नहीं है. So this is your student table. We have 1 2 3 4 5 in it, and this we have this course table which has nothing. Let's try and insert a record in this course table here. So insert into course values. Let's insert this 101 which is there in the primary key table. Okay, 101 है, उसके course it shouldn't be the first thing. Okay, course ID is this,
course name is data science and roll number is 101. Okay, this will be inserted. ये वाला record जो है वो आपका insert यहाँ पे हो जाएगा. But जैसे ही I'll try to insert something which is not there in your primary key table, for example this 106, it will give you an error which says cannot add or update a child row. ऐसा कोई भी वैल्यू आप आपके चाइल्ड टेबल में ऐड नहीं कर सकते which is not there in parent key. Okay? Parent table की primary की column में अगर वो value नहीं है तो you cannot have its reference here in your child table. Okay, that's the first thing happens when you have this kind of relationship. Now, मैम एक डाउट था जो 177 एंड 178 वाली लाइन, इसमें जो रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस स्टूडेंट और फिर जो कॉलम नेम होगा ये हमारी स्टूडेंट और टेबल वाली का होगा. हाँ, yes. Okay, I'll just write the syntax to define this foreign key. Okay, so this is the keyword we need to use, foreign key. यहाँ पे आपका आएगा child table column name, references, parent table, parent table name and parent table okay. Clear now? Okay. Now let's understand the second scenario we discussed, that अगर कोर्स टेबल में आपका वैल्यू है 101, ये वाले ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कोर्स में भी है और स्टूडेंट में भी है. Student is your parent table and course is your child table. So these tables can also be referred as, this is referred as a referenced table because this table is being referred, and that is why and this child table can also be referred as a referencing table क्योंकि हम यहाँ से किसी और टेबल को रेफर कर रहे हैं. Okay. Now, as this 101 roll number is there in both of these tables, एक कोई student है जो यहाँ पे regularly class कर रहा है and his information is added to the student table as well as the course table. But now somebody came and tried to delete his or her entry from student data. Student table में से ये 101 delete करने की अगर कोई कोशिश करता है, okay, delete from student table where roll number is equals to 101. So this record is already there in the child, and that is why it will throw us an error that cannot delete or update a parent row. Okay, आप parent table से ऐसा कोई value delete नहीं कर सकते जो आपकी child ने already inherit किया हुआ है. Now, what if I have to delete this from both the tables? What if for some reason a student have dropped out from the course? तो अभी obviously उसका data तो हमें database से delete करना पड़ेगा, but we have to make sure that we are deleting it from both the tables, all the tables which are related to each other, right? And for doing that, one way is to first delete it from your child table, that is delete from course where roll number is equals to 101. यहाँ से delete करने में कोई error नहीं आएगा, and once it is gone from this course table, gone from your child table, we will be able to delete it from your student table, your parent table also. Now if you go, student में भी 101 नहीं रहेगा, कोर्स में भी 101
नहीं रहेगा. Then again, what did we make sure is, if even if you are deleting a record, even if you are deleting the information of one student, that should get deleted from all the related tables. Otherwise what will happen, it will again create confusion, right? कि 101 नाम की तो कोई student है ही नहीं, तो why her information is there in the course table? Why do we have that roll number in the course table? Okay, now ये हो गया one way to delete a record from both the tables as per our requirement. बट यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या करना पड़ रहा है, दोनों टेबल से अलग अलग से रिकॉर्ड्स को डिलीट करना पड़ रहा है. व्हाट इफ मल्टीपल टेबल्स आर रिलेटेड दिस वे? We cannot go and check each and every table to see if that record is there in that table and then delete it, right? So what we have to do, we can just try to cascade the deletion of pk value to all related tables. Okay, तो जैसे अगर आप प्राइमरी की टेबल से कोई रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो, that record should get deleted from all the related tables you have. And उसके लिए the keyword we have is this on delete cascade. Okay, so let's just drop the course table and recreate it. So this on delete cascade, cascade करने का मतलब क्या होता है? What is the meaning of cascading something? Domino effect, like one reacting and giving other result going on. Delete recursively. हाँ, so basically हम बोल सकते हैं कि आप एक जगह पे चेंज करो और वो जो चेंज है वो सारे रिलेटेड जगहों पे रिफ्लेक्ट हो जाए, कास्केड हो जाए. Okay, so here we want to make sure that if I'm deleting something from my parent table, that deletion should be reflected in all the related tables. It should cascade in all the related tables. And uske liye what you need to do is to add this on delete cascade in your foreign key definition. Okay, foreign key definition में हमें on delete cascade add करना पड़ेगा. Same as this on delete cascade, we do have on update cascade. तो on delete cascade क्या करेगा, delete कुछ करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा. on update cascade क्या करेगा, update अगर कुछ करते हो आप प्राइमरी की तो that will be reflected to all the child tables. ठीक है, so on delete cascade and we have this on update cascade. Let's create this table. Okay, I'll get these two queries down here. Okay, तो अभी स्टूडेंट टेबल में 2 3 4 5 है और कोर्स में कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो लेट्स ट्राई एंड इंसर्ट एनी ऑफ दीज रोल नंबर वैल्यूज इन आवर कोर्स टेबल. कोर्स में हम एक रिकॉर्ड ऐड करेंगे 102. नाउ वी हैव दिस 102 इन बोथ ऑफ दीज टेबल्स. नाउ व्हाट हैपेंड अर्लियर, जब हमने पेरेंट टेबल से ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश करी थी डायरेक्टली, तो वी गॉट एन एरर. बट नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ आई ट्राई टू डिलीट माय रिकॉर्ड फ्रॉम माय पेरेंट टेबल. 102, I am deleting it from my parent table here. So it didn't give you any error. If you go and check the student table, 102 is gone from here. और अभी अगर आप कोर्स में भी जाके देखेंगे तो 102 is gone from here as well. That means हमने सिर्फ पेरेंट से डिलीट किया तो that particular record got deleted from all the related tables. We didn't had to go and delete those records separately from each of the related tables. And that is what this
on delete cascade does. Okay, understood everyone the use of this on delete cascade? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हो गया आपका ऑन डिलीट कास्केड. नेक्स्ट है आपका ऑन अपडेट कास्केड. ऑन अपडेट कास्केड क्या करेगा? अभी अगर ऑन डिलीट कास्केड का ये यूज है तो व्हाट कैन बी द यूज ऑफ ऑन अपडेट कास्केड? जो भी पेरेंट में आप अपडेट करोगे दैट विल बी रिफ्लेक्टेड टू द चाइल्ड टेबल. सो लेट्स इंसर्ट दिस 103 इन कोर्स टेबल. तो अभी आपके स्टूडेंट में 103 है एंड कोर्स में भी 103 है. Okay, now I'll go and update this student table, parent table to set roll number as 113 where roll number is 103. We are updating our parent table to change the record, change the roll number value from 103 to 113. तो अभी हमने कोर्स पे कुछ भी अपडेट नहीं किया, बट इफ यू गो एंड चेक यहाँ पे भी जो है आपका रोल नंबर वैल्यू इज अपडेटेड टू 113. सो बेसिकली पेरेंट से जो भी हमने अपडेट किया, पेरेंट में जो भी हमने अपडेट किया दैट इज नाउ अपडेटेड इन चाइल्ड टेबल एज वेल एंड दैट इज व्हाट दिस ऑन अपडेट कास्केड डज. मैम अगर ये हम चाइल्ड टेबल में करते तो मतलब अगर यही वाला कॉलम तो हो जाता कि नहीं? यही वाला, सॉरी कैन यू से? जो प्राइमरी की है हमारे स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, अगर हम इसको कोर्स उसमें मतलब अपडेट करते हैं, कोर्स टेबल जो है अपडेट करते मतलब नहीं, नो मतलब जैसे यहाँ पे हमने पेरेंट में अपडेट किया वैसे आप बोल रहे हो कि कोर्स में अपडेट किया तो पेरेंट में रिफ्लेक्ट होगा क्या? नो, ऐसा नहीं होगा. हमने ऑन अपडेट कास्केड कहाँ पे ऐड किया है? वी हैव एडेड इट इन द फॉरेन की डेफिनेशन. तो दैट विल जस्ट मेक श्योर कि पेरेंट में जो भी अपडेट है वो आपके चाइल्ड में अपडेट हो. अभी देखो ऐसे भी अगर आप सोचो, ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा टेबल्स भी एक दूसरे से रिलेटेड हो. ओके, यू मे हैव लाइक ये स्टूडेंट टेबल है, कोर्स टेबल है, एक और टेबल वी हैव व्हिच इज लेट्स से फैकल्टीज का इंफॉर्मेशन उसमें से है. So they have their ID, name, and the course they are taking care of. So that is, let's say, whatever is the name and data science. Okay, and this information, this student table should contain. यहाँ पे हमें ये भी एक चीज सेव करनी है that this course is being taken care by which faculty. तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी फैकल्टी को यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन करना पड़ेगा एंड देन वी कैन हैव दिस आईडी एज फॉरेन की हियर, राइट? इस आईडी को आप यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन करिए एंड देन यूज क्या बोलते हैं कॉलम एज दी फॉरेन की हियर इन योर चाइल्ड टेबल. ओके, अभी फॉर सम रीजन, ओके, तो इस केस में क्या होगा? आईडी एंड हियर यू विल ऐड 1. नाउ फॉर सम रीजन किसी फैकल्टी ने मान लो दे स्टॉप्ड वर्किंग हियर. ओके, अभी हमें क्या करना पड़ेगा? You will have to delete this record from this faculty table, right? And it will get reflected here as well in the course table, is it? It should happen, right? Faculty say, okay, is it confusing? 3 tables are confusing. Yes, ma'am. इनफैक्ट हमको अगर कोर्स में फैकल्टी में अगर हमको अपडेट का लगाना है तो हमको फैकल्टी वाली टेबल में लिखना पड़ेगा ना अपडेट का स्केलिंग. हाँ, फैकल्टी वाले ही टेबल में लिखना पड़ेगा. और जो कोर्स में लिखेंगे हम वो मतलब स्टूडेंट के लिए होगा. नहीं, ऐसा नहीं. ओके, in this particular example
कोर्स इज द चाइल्ड टेबल फॉर बोथ ऑफ दीज टेबल्स, फैकल्टी और स्टूडेंट, ये दोनों के लिए ही कोर्स टेबल आपका चाइल्ड टेबल है। ठीक है, तो यहां से भी आप अगर कुछ डिलीट करते हो एंड इफ यू हैव दिस ऑन डिलीट कास्केड, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यहाँ से कुछ डिलीट करते हो तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए। बट ऐसा कोई रिकॉर्ड अगर आपकी कोर्स में है which you are deleting but you do not want to delete it from faculty, anyway it won't happen कि अगर आप चाइल्ड से डिलीट कर रहे हो तो वो डिलीशन आपका पेरेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बिकॉज चाइल्ड से तो आप एनीवे डिलीट कर ही सकते हो, राइट? आपको अगर इफ यू डू नॉट हैव दिस ऑन डिलीट कास्केड एंड ऑन अपडेट कास्केड कीवर्ड्स इन द फॉरेन की डेफिनेशन, हमें क्या करना पड़ा था? वी हैड टू डिलीट आवर रिकॉर्ड फर्स्ट फ्रॉम द चाइल्ड टेबल एंड देन फ्रॉम द पेरेंट टेबल, राइट? तो चाइल्ड में से डिलीट या अपडेट करते हो तो वो पेरेंट में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वी हैव टू गो एंड अपडेट और डिलीट फ्रॉम द पेरेंट टेबल सेपरेटली, दैट्स व्हाट वी सॉ हियर, राइट? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पेरेंट के जो भी अपडेशंस और डिलीशंस है वो आपके चाइल्ड में रिफ्लेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ दिस ऑन डिलीट कास्केड एंड ऑन अपडेट कास्केड। एंड when a row of your table is related to a single row of another table of your child table, that is referred as one-to-one relationship. यहाँ की एक row is related to a single row of this course table, that is called as one-to-one relationship. Now, what is this course table? We have stored SQL separately in this course table. Okay. Now all of you are doing data science as well as SQL. So what we have to do? We have to store two records here for a single student. 101 is doing data science course as well as SQL course. So here in this case, a single record from the student table is related to multiple records of course table. So 101 is there in two rows of this course table, that is your one-to-many relationship. यहाँ का एक row is related to multiple rows here, that is one-to-many relationship, and that also says that we can have duplicate values in foreign key column. Okay, foreign key column में duplicate values हो सकती है in case of one-to-many relationships. Okay, primary key values को हम रेफर कर रहे हैं as foreign key, that doesn't mean कि primary key के rules यहाँ पे apply होते हैं. Okay, so you can have duplicate values in a foreign key column in case of one-to-many relationship. You can also have multiple foreign keys in a single table to relate this table with multiple tables here. So can we inherit the properties of multiple parent classes in a single child class? कर सकते हैं. That's the same thing here also. ठीक है, हमारे लिए these two are parent और इन दोनों की प्राइमरी कीज को हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं as foreign keys. तो your foreign key, even if you are referring primary keys as foreign key, your FK can have duplicate values in case of one-to-many relationship. And what else? We can have multiple foreign keys in a single table. Okay. So that's the basic thing happens when you define this primary and foreign key relationship, and we also discussed about this on the delete and on update cascade keywords. Anyone have any questions here? मैम इस वाले में अपडेट वाले का कोई 3 वाले का एग्जांपल ऐड कर दूं, कास्केड वाले का.
ऑन अपडेट कास्केड का एग्जाम्पल आपको फिर से देखना है। ओके नहीं मतलब 3 वाले का ऐड कर देना है इसमें, जब आप फाइल भेजोगे ना, हाँ हाँ हाँ, तो जिसमें मल्टीपल टेबल्स हो। अच्छा 3 टेबल्स वाला, बट क्या ऐड करूं मैं इसमें एक्चुअली? तो जो आपने समझाया था उसी टाइप का कोई ऐड कर, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। It is little confusing, I understand. But yeah, we can understand these relationships when we will work on joins for more than 2 tables. Okay, वहां पे हम समझेंगे कि ये relationships को कैसे समझना है between multiple tables. ठीक है? I cannot add it in these notes actually. I'll try to explain this once again in our next class. ठीक है? Okay. Yeah, I cannot write that much, theory here, but we will try to discuss this once again in tomorrow's class. Okay. Thank you. Okay. Okay then. Thank you everyone. Good night. Good night, ma'am. Good night, Good ma'am. night. Good night, ma'am. Good night, ma'am.
Hmm.